Okay, Bismillahirrahmanirrahim. If you recall, in previous class we talked about present perfect tense, and we discussed that it is used for any action that happens in the past but has some kind of result or impact on the present. आगा कार चिपा past की विषय the present से रसा तालुक हुई, no, आगा मुको present perfect tense के इस्तेमाल हो, और आगा कार complete she we remember. Now next we have present perfect continuous tense. If I ask you, तासुल तक कल इन क्लास आखिर 2 months. 2 months. 2 months back means चलेगा past के शुरू शुरू. 2 months मह के. आगा past होगा. Past देगा ना? Yes sir. We are still taking class. उसम दा class रवान दे. That is present. सही ना? And it will go further into future, and that may end in future. पर future के में भी चिम्याश बस खत्मी की, 2 म्याश बस खत्मी की. सही ना? But it will go to future. वही? Yes sir. Now, तासुल तक के तकरीबन निमा घंटे न मख करागल ये ना से क्लास की. That is past. सही ना? You are still sitting here in the class, and your class may end after an hour or half an hour or 30 minutes, whatever, 40 minutes. सही ना? No, 30 minutes मख के दा past हो. उसम तासु पर क्लास के ना से that is present. Or it will go further into future after 30 minutes या 40 minutes पर तासु क्लास न जे. No, आकार ब future तरफ ताऊँ. वही? So we have like past, present, and action starts here and it comes to present, and present it is still in progress. दल तक ये progress की थी, and it will go to future. पर future के खत्मी की न खत्मी की it depends. आगे से ज़मून कार निश्चित. होएगी? हो कार बस start की गई पर past की. लेकिन सासु class start से भी पर December की. सही ना? December is past. It is February, your class is still going on. उसम रवान दे. And it will go further into future. पर future को बिया खत्मी की चलते कि म्याश पस खत्मी की 2 म्याश के पस नागा future. होएगी? So any action चाहा पर past की शुरूशी, पर present के रवानवी, और पर future के बचर तक खत्मी की द आगे action बयान वाले द पारा we use present perfect continuous tense. Clear? Yes sir. If I say चे ज पर GHS is हरियाणा कोट के the shpag myashtu na teaching ko, it means shpag myashti mah ke ma teaching start kar dalta ki usam rawan de shpag myashti mah ke that was past, still I'm teaching there, usam zama teaching dalta ki rawan de, and future ke pata na lagi kala pura dalta teaching ko. Hoye no, that is how we use present perfect continuous, and the concept clear ke answer sirf kha che padi koy sha istemal hu bekam de, that is the concept. पर past के कार शुरू शवी उसम रवान दे, पर future के बचर ताकत मी की रागे बयान वाले दो पार बोलूँगा present perfect continuous tense इस्तेमाल. The structure is very simple. We have 2 helping verbs, has and have. And you know, has is with singular he, she, it or singular noun, and have with I, you, we, they or plural noun. Yes sir. So here, the clear da. When we use here an ing form or present participle, चिकम दे अगर इस्तेमाल को object if any. The verb transitive we know object जरूरत पे भी object को लगो, and then since and for. If you remember मुंगा we लो since and for बचरता इस्तेमाल हो. Change. कला changeable time we no since. कला unchangeable is sense. Yes. चिकल time unchangeable दे द वक्त तेरे दूसरा न change की गनो मुंगा since इस्तेमाल हो. और चिकल द वक्त तेरे दूसरा पागा duration की तब्दीली राजी then we use for. Like for example मुंगा December न दलने के class आखलू. It is unchangeable time. दा December दा लफ्ज़ चिरे दा न change की, दा duration न change की, मुंगा हर सुमरा time दलते तेरो December बया दो. But if I say ची मुंगा 2 महीनों न दलते की class आखलू, and after another month passes, योबल म्याश तेरे शी बिया मुंगा होई ची we have been taking class for 3 months. योबल म्याश तेरे for दिन 4 months. No दा duration से की दा change की दा वक्त दा तेरे दूसरा duration change की. So for changeable time we use for, and for unchangeable we use since. So first we have subject, then helping verbs, then ing form, object, and since for. For example, I have been teaching English for about 10 years. Now that 10 years is that changeable time. Well, maybe after 1 year I would say 11 years. But teaching then I would say 12 years. No, that 10 years the duration that is changeable. Remember, अक्सर कल कोई मुकर्ररा मुद्दत और मुकर्ररा ज़माना न बदे माने बख्पल से तरह से पूरे नेम पोए शेविचे मुकर्ररा मुद्दत से शेले और मुकर्ररा ज़माना से शेले. But simple, changeable time दे for, unchangeable since. सही ना? ज़रूरी नहीं that time they mention शी. Like for example, Pakistan has been facing problems since independence.
Pakistan has been facing problems since independence. उस independence में लफ्ज़ चीज़ें दस याद कुछ आवाज़ से time न दे यो खास दे च कमाल creation दे आवाज़ मज़ refer को but it is unchangeable आवाज़ न change की no that is why I say since independence या हम कोई since childhood सही है since childhood no childhood दा लफ्ज़ चीज़ दा न change की no that this duration the para ya this lafz istemal shi cha न change की गिरा के रहूंगा since इस्तेमाल so I've been teaching English for about 10 years if I say since 2013 2013 से मैं पढ़ा रहा हूं then I would say since 2013 होएगा जे 2013 से याद हो से 2013 ना टीचिंग को मन वजह से याद हो since but here 10 years then that changeable that is why I'm using for we have been taking language class since December 2022 सही ना till the December 2022 नमूंगा क्लास ऑफ that is now unchangeable the changeable time नहीं नमूंगा since इस्तेमाल हो it has been raining since morning सुबह से बारिश हो रही है now the word morning is unchangeable दा न change कीगी but if I say it has been raining for 2 hours उस अदब घंटे चली दा changeable बोले जो घंटा पहले तेरे शी then we would say 3 hours भले घंटा तेरे शो 4 hours no आगा changeable Talha has been recording the class since 1:30 1:30 से वो क्लास जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है so now again this time is unchangeable the time changeable नहीं clear yes sir for negative we introduce not after has and have the has and have na pas munga sau ko munga not introduce ko no that is how we convert a sentence into negative for example it has not been raining for 2 hours 2 घंटों से बारिश नहीं हो रही you have not been taking class for 1 month आप 1 महीने से क्लास नहीं ले रहे सही है या नो तासे मुख्तलिफ एग्जांपल्स तास और कवल शे बस सिर्फ द हैज एंड हैव न बस नॉट लगवल शे एंड दैट इज नेगेटिव क्लियर है yes हां फॉर यस नो क्वेश्चंस ब्रिंग हैज एंड हैव टू द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एंड हैव द फिक्र स्टार्ट करावले पाखले की क्वेश्चन मार्क लगे हुए दैट इज यस नो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हैव यू बीन सिटिंग हियर फॉर 1 आवर क्या आप यहां पे 1 घंटे से बैठे हो ठीक है क्या आप 2 महीने से क्लास ले रहे हो हैव यू बीन टेकिंग क्लास फॉर 2 मंथ्स होएगी या क्या सुबह से बारिश हो रही है हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग होएगी कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स कैन यू आस्क मी क्वेश्चंस माने बदे की क्वेश्चंस के शामिल क्या आप 1 साल से जीएचएस हरियाणा में पढ़ा रहे हैं हाउ डू यू से दैट have you been teaching have you been teaching at GHSS Haryan Court for 6 months or since June 2022 सही ना since June 2022 सही ना yes any other question क्या आप सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे हैं Have you been waiting here since morning? क्या सुबह से आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं ठीक है अच्छा क्या आप अलकलम एजुकेशन सिस्टम में 1 साल से पढ़ा रहे हैं सही है हाँ क्या आप 10 साल से हरियाणा कोर्ट पे रह रहे हैं for 10 years सही ना और अगर मैं इस तरह कहूँ कि क्या आप 2010 से यहाँ पे रह रहे हैं then have you been living here since 2010 सही ना so that is how we make yes no questions in present perfect continuous tense clear yes sir you may write it Shabash next we have WH questions now WH questions now some of you have questions या among the WH words sir start to now WH words is also page and word where when how why etc so first we put WH words then has and have subject according to the subject we use has or have then when ing form rest of the sentence and question mark at the end for example what have you been doing for 2 hours अलग वो 2 घंटों ना जाते सकी अक्सर हम पुख्तों के वही बना ये 2 घंटों ना जाते सकी कोई क्या कहना suppose if you are studying something then ये 2 घंटों ना जाते स्टडी की ना स्ट्रक्चर दे what have you been doing for 2 hours 2 घंटों से क्या कर रहे हो the doing पर change के दल तक कुकिंग रहा वाले suppose 2 घंटों से क्या पका रहे हो राइटिंग रहा वाले what have you been writing for 2 hours 2 घंटों से क्या लिख रहे हो सही ना
and so on. ये लफ्ज़ बाकी change करें and you have a new question. तास रहे उन्हें question सजदा करें तो 2 घंटों ना यार 2 म्याश्तों ना यार for example 2 कारों ना सजदा करें. So what have you been learning for 2 years, for 2 months, etc. No, that is how we make WH questions. Where have you been living since 2010? 2010 से आप कहाँ पे रह रहे हो? Where have you been studying since 2010? Yeah, for 2 years या for 3 years. आता सुझा कोले से change कोले से. तो 2 कालों ने कहते कम जाके study की. Where have you been studying? कम जाके उसे की living. सही ना? कम जाके classes आखली. Where have you been taking classes for 2 months? अलग अलग language class में 2 महीने चलता आखले. Where have you been taking language class for 2 months? 2 महीनों से आप कहाँ पे language class ले रहे हो? No, दगा हंता सो आगा WH question जोड़ा वाले से. Why has she been crying for 20 minutes? वो 20 मिनट से क्यों रो रही है? ठीक है? Why have they been fighting for 10 minutes? वो 10 मिनट से क्यों लड़ रहे हैं? Why have they been fighting? पढ़ेगी? No, दगा ये लफ्ज़ change करें और साफ सरच दी उन्हें भी question चलेगा जुड़ी. Clear दी? हाँ, then we have another structure in WH words. आस्तमावी तो शिकल जम सर choice या selection राशि. No, what or which then object has and have subject been ing form rest of the sentence question mark. For example, which subject have you been studying since morning? सुबह से कौन सा subject जो है वो आप पढ़ रहे हैं? ठीक है? Which topic या which tense have you been discussing for 2 days? 2 दिनों से आप कौन सा tense जो है वो आप discuss कर रहे हैं? वही Or what topic has the teacher been teaching for 2 days? दलते क्यों जा topic चले दे limit मुंग तो मालूम नहीं देती सुमरा topics थी बला topics थी. No, what topic has the teacher been teaching for 2 days? 2 दिनों से teacher कौन सा topic पढ़ा रहा है? वही? Yes sir. That is how we make WH questions, but पदे structure बांधी. Interrogative or negative interrogative माता उससे will hasn't or haven't चले दा start तराशी then subject been ing form rest of the sentence question mark. For example. Haven't you been learning tenses for 2 years? क्या आप 2 सालों से इंग्लिश नहीं सीख रहे? Haven't you been? Hasn't it been raining for 10 minutes? क्या 10 मिनट से बारिश नहीं हो रही? सही है? अगर दिन आता है जो full structure था सो क्या है? Have start तरह she has and have they are subject they are not. Like for example, have you not been learning tenses for 10 years? क्या आप 10 सालों से tenses नहीं सीख रहे? या इंग्लिश नहीं सीख रहे वगैरह? वही No, पदे तरह का माने मुंगा negative interrogative या interrogative चिकम sentences दी आवाज जोड़ो. Is it clear? Yes sir. Any question? No sir. You may write it, शाबाश.